fundamentally four. One, you need parliamentarians, not a building, you need parliamentarians. And parliamentarians मैं किनको कहता हूं? आपने एक उर्दू का लफ्ज सुना होगा वकार. There's no English translation for me, but reputation is probably the nearest to wakar. Until and unless parliamentarians have established their reputation in the eyes of the public, no parliamentary democracy can exist anywhere in the world. That is the first key ingredient. Vakar of the parliamentarians themselves. Number two ingredient, जो equally important है, is the stakeholder, the political party itself. A political party has to be a political party. And जब मैं अभी आपको बताऊंगा, I'll be very honest with you today. Do we have a political party in existence today in Pakistan? Or are we just parties by name? Are we just parties by name? Because until and unless you have a political party in existence, parliamentary democracy is not achievable. This is the second most important ingredient. ये जरा गौर से सुनिएगा. दूसरा ingredient. तीसरा ingredient का मैंने पहले ही जिक्र किया. The will of the people and the recognition by the people कि they have the power. The revolution जिसको आप कहते हैं. जहां लोगों को एहसास हो जाए कि ये ताकत हमारे पास है, not an elite few. Not some people जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें ली हुई हैं, not some people जो बड़े well connected हैं, but truly the people have the power. जितना भी गरीब हो, जितना भी अमीर हो, हर एक की बराबरी है in terms of vote, and the vote translates. That is the third ingredient. लेकिन चौथा ingredient भी उतना ही ज़रूरी है उसके साथ ही, उसको मैं part of the third ingredient ही कहता हूं, और वो ये है कि the will of the people is nothing without leadership. A leader has to be born, a leader has to be present for the will of the people to be translated, for the will of the people to be transferred into true parliamentary democracy. And last, जो चौथा ingredient है, जो हम सबको पता है, कुछ आप लोग youngsters हैं, उन्होंने शायद experience नहीं किया होगा, लेकिन कुछ हमारे जैसे हैं who've seen a lot of history, contemporary history themselves. The third ingredient, fourth ingredient for Pakistan is guess what? The fourth ingredient, अगर आप history देखेंगे, are the interferences from outside parliamentary forces. And those Pakistan के context में हमारे पास history में देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, दो instances हैं, दो institutions हैं which have constantly been involved in uprooting the process towards parliamentary democracy. Number one ingredient is what we call the establishment. We've got martial laws in our history. Martial laws हमने सब experience किए हैं, जिन्होंने हमेशा जब भी हमने achieve करने की कोशिश की है, democracy derail किया गया. और दूसरा judicial interference in the context of Pakistan, और बड़े कम मुल्क में ऐसा है जहां हमने देखा हिस्टोरिकली कि जब भी एक गैप आया है तो जुडिशरी ने भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया इन पॉलिटिक्स एंड इन हिस्टोरिकली स्पीकिंग इन, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो मैं कह रहा हूं विद द फैक्ट्स कि ये हिस्टोरिकली स्पीकिंग इंटरफेरेंस हुई है इन पॉलिसी मैटर्स, इन पॉलिटिकल मैटर्स, इन मैटर्स जो कि जुडिशरी को नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दिस इज गवर्नेंस बाय जुडिशरी. तो ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि बहुत अहम है. सो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. क्या हमने पहली जो इशू है, पहला पॉइंट जो है कि पार्लियामेंट का वकार, पार्लियामेंटेरियंस का रोल, हैव वी अचीव दैट? I will start very briefly and take you through Pakistan's history because that is part of the topic on this. 1947 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था. वी डिड नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई और उनको पहले दिन एड्रेस किया और कहा कि आपका सिर्फ एक ही काम है. आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, पाकिस्तान का आइन बनाएं, मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. इट टुक देम 10 years. 10 साल तक वो डिबेट करते रहे, पार्लियामेंट बिल्डिंग में बैठे रहे. बड़े बड़े अच्छे लोग थे, बैठे रहे, लेकिन उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई. क्यों नहीं बनाई आप पूछेंगे? बिकॉज ऑफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कि एज लॉन्ग एज देवर इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली and did not make a constitution, they would continue. जिस दिन वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते उस दिन उनको स्टेप डाउन करना पड़ता. तो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. वो जितना देर करते कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उतनी देर तक वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे रहते. बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फ्लिक्ट वी लॉस्ट 10 years. अल्टीमेटली कोर्ट ने आके कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं. कॉन्स्टिट्यूशन बन गई 1956 की पहली. What happened then? Then we had these musical chairs. I call it the era of musical chairs. Prime ministers kept changing. अच्छे अच्छे प्राइम मिनिस्टर्स आए. कोई 15 दिन लास्ट किया, कोई 2 महीने लास्ट किया, कोई 3 महीने लास्ट किया. वकार जो था, रेपुटेशन ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस kept going down. रिजल्ट क्या हुआ? मार्शल लॉ. दोसा जजमेंट भी आ गई, जजमेंट ने उसको एंडोर्स भी कर दिया. सो व्हेन पार्लियामेंटेरियंस लॉस्ट देयर रेपुटेशन, द रिजल्ट वाज पाकिस्तान पहले अपने 10 साल में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सका. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी, इमीडिएटली आफ्टर अ ईयर और सो उसको खत्म कर दिया गया. लेट्स फास्ट फॉरवर्ड टू 1973. 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन बन गई. इलेक्शन हुए उसके पहले. द फर्स्ट इलेक्शंस वर रिग्ड, मैसिवली रिग्ड. so much so that people came out in the streets. Movement हो गई, violent movement happened, and eventually the second or third martial law of Ziaul Haq came. An American communique जो एम्बेसडर ने लिखी वापस, उसने कहा नॉट ए डॉग बार्क्ड. लोगों ने बल्कि मिठाइयां बांटी एट द डीरेलमेंट ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बिकॉज द पार्लियामेंटेरियंस डिड नॉट हैव अ ग्रेट रेपुटेशन. पीपल वर नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड देम. देन व्हाट हैपेंड? द सेम पार्लियामेंटेरियंस जॉइंड जियाउल हक. उनकी रेपुटेशन और खराब हो गई. ओके, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड अगेन. फेट इंटरवीन्ड, जियाउल हक्स प्लेन क्रैश्ड, डेमोक्रेसी वापस आ गई. तो पार्लियामेंटेरियंस ने क्या किया? आई कॉल इट द रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स. रिवॉल्विंग डोर आप लोगों को पता है क्या है? कभी आप होटल में गए हैं जिसमें एक दरवाजा होता है, वो गोल सा दरवाजा होता है, आप एक साइड से एंटर करते हैं और दूसरी साइड से लोग बाहर एग्जिट कर रहे होते हैं. रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स. रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स में क्या हुआ कि एक हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, एक थी बेनजीर भुट्टो शहीद की. 1 साल 2 साल बेनजीर की हुकूमत आती थी, उसको कंप्लीटली जो PMLN की हुकूमत थी वो उसको डीरेल करने की कोशिश करती रहती थी, उसको डीरेल करती थी. थोड़ी देर बाद वो आ जाते थे वापस, फिर बेनजीर भुट्टो आ जाती थी और ये सारा मामला चलता रहा. इवेंचुअली एक दिन आया और लोग हंसते थे. आपको याद होगा डिफेक्शन क्लॉज के, वो लोगों को बंद कर दिया जाता था मरी में कि आपने वोट इस तरह करना है. पार्लियामेंटेरियंस को छांगा मांगा लेके जाया जाता था.
تو پارلیمنٹیرینز کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے لوگ. دے لاسٹ مور آف دیئر ریپوٹیشن. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ؟ ایک وقت ایسا آیا, اینڈ دس از اے میٹر آف ریکارڈ, میں نے نیشنل اسمبلی میں جا کے یہ چیک کیا کہ واقعی یہ درست بات ہے کہ نہیں. اٹ از اے میٹر آف ریکارڈ کہ دا فاسٹسٹ constitutional amendment, the fastest constitutional amendment which was passed, جو کہ صرف 1.5 منٹ لگا اس constitutional amendment کو پاس کرنے میں, 1.5 منٹ. اس میں نیشنل اسمبلی نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو امیر المومنین بنا دو. forget about parliamentary democracy. وہ تو لکلی چونکہ ڈیزالو ہو گئی نیشنل اسمبلی اس کے بعد, اور وہ سینٹ میں نہیں جا سکا معاملہ, تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں بنی. لیکن اس لاس آف ریپوٹیشن کا کیا ہوا؟ لاس آف ریپوٹیشن سے یہ ہوا کہ آج بھی اس کے امیجیٹلی بعد مشرف صاحب آ گئے, مارشل لا لگ گیا, اور سپریم کورٹ نے پھر اس کو انڈورس کر دیا اس کیس کو, اور کہا کہ دس از دا کریکٹ مارشل لا. سو ان افیکٹ if you look at Pakistani history, why we have not been able to achieve parliamentary democracy, fault also lies with us parliamentarians. And آج بھی آپ دیکھیں, پچھلے 2 سال پہلے, 2 سال سے آپ دیکھیں, ہمارا مین کام کیا ہے as parliamentarians؟ ہمارا کام ہے قانون سازی کرنا. قانون سازی کس کے لیے کرنا؟ for the betterment of the public, آپ لوگوں کے لیے, بہتری کے لیے, ملک اور قوم کی خدمت کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ نے پچھلے 2 سال سے قانون سازی کس طرح کی. اٹ از کالڈ بلڈوزنگ آف لاز. 1 منٹ میں بل آتا ہے, کوئی پڑھتا بھی نہیں اس کو, سٹیمپ کرتے ہیں اور لا بن جاتا ہے. لوگوں کا جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس پہ سے وقار اترتا جا رہا ہے. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی وی ہیو اسٹل ناٹ بین ایبل ٹو اچیو ٹرو پارلیمنٹری ڈیموکریسی. My suggestion would be, my aim is, and that is my endeavor, اور یہی میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ ہم اپنا پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ خود ہی اپنا وقار اوپر کریں. We have to first improve ourselves. We have to first act like parliamentarians. Then you will respect us. Then people will respect us. And only then will we be able to achieve true parliamentary democracy. That is my first ingredient. سیکنڈ پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس. میں کئی فورمز پہ جا کے بات کرتا ہوں, اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ USA کی پالیٹکس, آئی ٹاک اباؤٹ UK کی پالیٹکس, اینڈ آئی سے کہ لک ایٹ دیئر پارٹی سسٹم. ان کے پارٹی سسٹم میں آج اگر اوباما آتا ہے ان کی پارٹی میں, تو کل بائیڈن آ جاتا ہے, پرسوں کوئی اور آ جائے گا, ان نون, unrelated to each other, only rising from party politics. انگلینڈ کی پارٹیز کو دیکھیں تو 2 پارٹیز ہیں, یا مین پارٹیز جو ہیں کنزرویٹو اور لیبر. ان کے جو پرائم منسٹرز بنتے ہیں وہ کوئی بھی بن سکتا ہے, anybody who rises from the ranks. Their political parties are not dynastic. Their political parties are not one-man show. They are truly democratic inside. So ہم جب تک اپنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ٹوٹلی ڈیموکریٹک نہیں کریں گے, یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی will still be a dream we will achieve. I am going to shorten this. Third point. Third point was interference by other state actors. پاکستان کی ہسٹری میں we've all seen martial laws being imposed. پاکستان کی ہسٹری میں we've all seen the judiciary act and endorse those cases. ہم نے دیکھا ہے, آپ سٹارٹ کر لیں دوسا کیس سے, نصرت بھٹو کیس سے, آپ دیکھ لیں سارے کیسز جو اس کے بعد آتے رہے ہیں. ہمیشہ جب بھی موقع ہوا ہے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آ گیا. جب ڈاکٹرن آف نیسیسٹی آپ ختم کرتے ہیں, اس کے تھوڑی دیر بعد وہ پھر دوبارہ سے ریوائیو کیا جاتا ہے ہماری ہسٹری میں. اس کے علاوہ جب بھی گیپ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جوڈیشری ایسے کیسز, ریکو ڈک کیس ہو گیا, بہت سارے کیسز ہو گئے جو ہمارے ماضی میں ہیں جہاں جو گورنمنٹ کے میٹرز ہیں اس میں انٹرفیئرنس کرتی رہی. دوز آر آل تھنگز دیٹ ڈیریل پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا کانسیپٹ.
Parliamentary democracy में Parliament is sovereign. There is a cabinet. There is a Prime Minister responsible. The entire ministers are responsible to the Parliament. Parliament is a watchdog. Judiciary acts within its sphere, अपनी jurisdiction के अंदर, and executive only implements. That is the ideal format of a parliamentary democracy. लेकिन हमारी सारी mixed up हो जाएगी. अगर history देखें, everybody is interfering with everybody else's business, not their own. अगर आप history में देखें तो establishment आके तो martial law लगा देती है. अगर आप देखें तो judiciary आके बात करना शुरू कर दी है policy matters की, कि आपने प्राइस शुगर की कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए. So all these matters need to be every body, every institution needs to be within their sphere. Last चीज जो थी, I spoke about the will of the people and leadership. Will of the people, जिस तरह मैंने कहा, आज तक हमने पाकिस्तान में बात तो बहुत की, लेकिन will of the people actually देखी नहीं. Will of the people पहली बार मैंने एक्सपीरियंस की है अब. एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि देयर इज अ गुड न्यूज. द गुड न्यूज इज कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन जवान है. दे नो द सिस्टम, दे रीड एवरीथिंग, वो एजुकेटेड थ्रू द सोशल मीडिया नेटवर्क, दे आर एज एजुकेटेड एज एनीबडी एल्स, दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. और इस बार जब इलेक्शन हुआ तो आपने देखा कि पीटीआई एक बड़ी मकबूल पार्टी थी, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ. पीटीआई को सिंबल उसका ले लिया गया. आप सब ने वो केस देखा था, मैंने खुद ये केस किया था. पीटीआई का सिंबल ले लिया गया और उसका मकसद ये था कि लोग कंफ्यूज हो जाएं. द पर्पस वाज वेरी सिंपल, दैट पीपल शुड गेट कंफ्यूज्ड, सो कंफ्यूज्ड दैट दे विल नॉट बी एबल टू वोट. बट you people, you said no, this right of ours cannot be taken away. We will go through this process. Without the symbol we will still vote. और वोट किया, चुप करके किया, बर्दाश्त करके किया, वोट किया, एक्सरसाइज की अपनी पावर. मुझे याद है जब मैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे फिर रहा था उस दिन, तो बच्चियां आके चुपके से जो लाइन पे खड़े थे लोग, उनको कह रही थी आपने बैंगन को देना है, बैंगन को देना है, बैंगन को देना है, बैंगन को देना है. दूसरे पोलिंग स्टेशन पे गया तो किसी ने हाथ पे बनाया हुआ था निशान, शायद करेले का या किसी का, वो कह रहे थे कि ये आपने इधर वोट देना है, इधर वोट देना है. मीनिंग देयर बाय दैट पीपल वर वेरी अवेयर. पीपल न्यू कि हमें हमारा एक्स वोट क्या है. दे न्यू देयर पावर ऑफ वोट एंड दे सेड कि हमने इस बार एक्सरसाइज करना ही करना है, और उन्होंने किया. एंड आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिस्टर इमरान खान, कि उन्होंने लोगों की ये जो विल है जो आज तक मिस कर रही थी. मैंने आपको एग्जांपल दिया, पहला मार्शल लॉ हुआ, पहला मार्शल लॉ हुआ तो लोगों ने कहा कि ना, नॉट ए डॉग बार्क्ड. दूसरा मार्शल लॉ हुआ, लोगों ने मिठाइयां बांटी. तो पीपल हैड नो विल, दे डिडंट रियलाइज, दे डिड नॉट नो देयर पावर. उनको पता ही नहीं था कि ताकत कितनी है वोट की. अब इस इलेक्शन के बाद वो क्लियर हो गया. तो इसलिए मैं देखता हूं कि अब हमने करना क्या है. आप एक प्याले की समझे, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक मेटाफॉर. कई बार शेक्सपियर भी मेटाफॉर कहता था, मैं शेक्सपियर तो नहीं हूं, लेकिन एक मेटाफॉर मैं आपको देता हूं. एक प्याला भरा हो पानी से, बिल्कुल उसको एक कतरा और डालने की जरूरत हो तो फिर वो प्याले से निकल आएगा उसका जो पानी है, लेकिन प्याला खुद कतरा नहीं डाल सकता. विल ऑफ द पीपल आ गई है, प्याला भर गया है, विल ऑफ द पीपल इज देयर. अब हमें सिर्फ एक कतरे की जरूरत है, और कतरा एक लीडर डाल सकता है. द मोमेंट दैट हैपन्स वी विल कन्वर्ट दिस इनटू अ रेवोल्यूशन. यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ रेवोल्यूशन. सो आप अपने लिए तालियां बजाएं. आज मैं फ्यूचर बड़ा स्ट्रांग और पॉजिटिव देख रहा हूं. पार्लियामेंटेरियंस विल लर्न हाउ टू हैंडल इट, होपफुली. हम लोग आपस में, कल भी मैंने डिबेट की सेनेट में, और मैंने कहा कि अब ये जो
لڑنا ہے جھگڑنا ہے ڈبیٹ کے ذریعے لڑیں جھگڑیں, یہ ہمارا حق ہے, لیکن اس کو تمیز کے دائرے میں رہ کے لڑیں تاکہ ہمارا وقار بہتر ہو آپ کی نظر میں, آپ کے لیے کام کریں. وہ جب ہم کر لیں گے, ول آف دا پیپل از دیر, دا لیڈرشپ از دیر, دا لیڈرشپ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ سون بائی دا وے انشاءاللہ. اینڈ ایز سون ایز دا لیڈرشپ کمز آؤٹ, as soon as the leadership comes out, we will achieve our revolution and true parliamentary democracy, inshallah. Thank you very much.